Hi students, welcome at KitKan Digital Learning. I am your English teacher. Today I am presenting you unit number 5 and our topic is the reward from your book We Learn English class 7 published by Oxford University Press. Before starting our today's topic, I would like to advise you a few tips for effective learning and takes maximum benefit from KitKan Digital Learning. Like and subscribe your school channel so you will not miss any video. Carefully listen and watch video from start to end. Find out the answer of the question from the video. You have to watch the video multiple times until you have find the answer. Aslam was very fond of sports. He liked to play tennis and squash, but most of all he liked to ride his bicycle. असलम को खेलना बहुत पसंद था. उसे टेनिस खेलना पसंद था बट ज़्यादातर वो अपनी साइकिल चलाना पसंद करता था. ही kept in perfect shape by cleaning it regularly as he enjoyed taking part in bicycle races. वो अपनी साइकिल को परफेक्ट शेप में रखता था, उसे साफ़ सुथरा रखता था और रेगुलरली जो है वो इन्जॉय करता था वो बाइसाइकिल रेसेस में पार्टिसिपेट करना. आई विल रेस यू टू द वुड्स ही वुड चैलेंज हिज फ्रेंड्स. वो अपने दोस्तों को चैलेंज करता था कि जंगल तक मैं तुम्हारे साथ रेस लगाऊंगा. सेल्डम डिड ही लॉस अ रेस. कभी कभार वो रेस जीत जाता था. हिज शेल्फ वॉज adorned with trophies of all shapes and sizes, and on the wall were photographs of him receiving certificates from eminent personalities. उसका शेल्फ जो है वो ट्रॉफ़ीज़ से भरा हुआ था जो कि उसने स्पोर्ट्स वगैरह में जीती थी. ही ऑल्सो कोच्ड हिज फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स ऑन हाउ टू राइड अ बाईसाइकिल. उसने अपनी फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स को साइकिल चलाना भी सिखाई. द मोस्ट enthusiastic student was his younger sister Amna. He would often encourage her to enter races as she had learned the skill वो अपने बहन को इनकरेज करता था कि वो भी रेसेस में पार्टिसिपेट करे क्योंकि वो उसने साइकिलिंग बहुत अच्छी सीख ली थी. देन वन डे देयर वॉज अ मिसहैप वाइल राइडिंग हिज बाईसाइकिल. असलम फेल एंड ब्रोक हिज लेग. एक दिन एक गड्ढा आ गया जिसकी वजह से वो उसकी अपनी बाईसाइकिल से गिरा और उसकी टांग टूट गई. ही वॉज रश टू द हॉस्पिटल इमीडिएटली. उसे हॉस्पिटल ले जाया गया. ही स्टेड देयर फॉर अ वीक एंड आमना मेड श्योर दैट शी विजिटेड हिम एवरी डे. वो एक हफ़्ते के लिए हॉस्पिटल रहा और आमना उसकी बहन ने जो है ये मेक श्योर किया कि वो उसके उसे रोज़ विज़िट करने जाए. ऑल दो ही वॉज बैडली हर्ट, असलम वुड स्माइल एट आमना एंड सेड दैट ही हैड नॉट लॉस हर स्पिरिट्स. अगरचे वो बीमार था लेकिन वो आमना को देख के स्माइल करता था और उसे कहता था कि मैंने अभी भी अपने ख्वाब नहीं ख़त्म किए हैं. द टीम ऑफ डॉक्टर्स एट द hospitals tried their level best to mend the broken bone, but finally concluded that Aslam would be fully cured if he went to abroad for a major operation. असलम को जो है ये कहा गया था कि एक उसका मेजर ऑपरेट होगा और वो उसके बाद ही ठीक हो सकता है, अदरवाइज़ उसका कोई और हल नहीं है. असलम बिलोंग टू द मिडिल क्लास फैमिली एंड गोइंग फॉर ट्रीटमेंट अब्रॉड रिक्वायर्ड फॉर अ लॉट ऑफ मनी. असलम को जो है अपने ट्रीटमेंट के लिए बहुत पैसे चाहिए थे बाहर जाके इलाज करवाने के लिए. ही लेफ्ट द हॉस्पिटल ऑन क्रचेस एंड वॉज to remain this way until his family was able to arrange for the funds to take him abroad for the operation. और उसने हॉस्पिटल से घर आ गया और जब तक उसके घर वाले कुछ अरेंज नहीं कर पा रहे थे फंड्स वगैरह तब तक के लिए उसे ऐसे ही रहना था. असलम्स करंट कंडीशन मेड आमना लॉस her इंटरेस्ट इन साइकिलिंग बट he coaxed and knew it would take a lot of precisions and courage. इट वॉज़ नॉट वेरी प्लेजेंट साइट टू सी हर ब्रदर एंड ऑन क्रचेज. उससे अपने भाई को तकलीफ़ में देख के बहुत ज़्यादा दुख होता था. असलम एंड आमना लिव विद देयर फैमिली इन एन ओल्ड बट कंफर्टेबल हाउस विच वॉज ओन बाय वेरी वेल्दी पीपल मैनी ईयर्स अगो. असलम और आमना जो है एक ऐसी घर में रहते थे जो कि था तो बहुत पुराना लेकिन बहुत कंफर्टेबल था और एक बहुत ही अमीर लोगों ने ख़रीद लिया था उस घर को. असलम स्क्रचेज मेड अ लाउड साउंड एज दे टच द वुडन फ्लोरिंग ऑफ द हाउस. असलम नेवर फेल्ट सॉरी फॉर हिमसेल्फ एंड ऑलवेज लुक्ड हैप्पी. असलम की जो क्रचेस थे वो बहुत ज़्यादा शोर करते थे जब भी वो ज़मीन के वुडन फ्लोर से टच होते थे. ही सेट अ गुड एग्जाम्पल फॉर अदर्स हु बिकम सैड ड्यू टू माइनर सेटबैक्स इन लाइफ. उसने जो है एक एग्जाम्पल एक मिसाल कायम कर दी इन लोगों के लिए जो छोटी मोटी परेशानियों से परेशान हो जाते हैं. वन डे ही वॉज टीजिंग आमना एंड hastened after her. I'll catch up with you,
he yelled out to her as she tried to run away. In his haste, one of his crutches slipped from under his arm. As he tried to retrieve it, Aslam fell on the floor with the third on one of the wooden planks of the floor loosened and moved from its place, revealing a box beneath. असलम जो है अपनी बहन के साथ खेल रहा था उसे पकड़ने के लिए, और इसी भाग दौड़ में एक बॉक्स उसे फाइंड आउट होता है जो वुडन फ्लोर होता है उसके नीचे। सरप्राइज ही लिफ्टेड अप द बॉक्स, वो अपना वो बॉक्स उठाता है, वो बहुत हैवी होता है। When he opened it, he found a note that read, "This treasure is for the person who finds it." The box was full of gold coins. वो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था और उस पर लिखा हुआ था कि ये खजाना उसी के लिए है जो उसे ढूंढेगा। आमना hearing the noise turned around to see a plank out of place and shimmer of the gold coins. वो जैसी पीछे मुड़ती है उसे सिक्कों की चमक दिखाई देती है। द मनी from the sale of the gold coins, असलम proceeded abroad for treatment and returned fully recovered. असलम ने उससे अपना इलाज करवाया और घर वापस लौट गया। He was welcomed to the airport. उसका एयरपोर्ट पे जो है इस्तकबाल किया गया। When he became an adult, असलम married a disabled girl because to him a disability was as normal as being normal could be. यानी कि उसने एक डिसेबल लड़की से शादी की ये दिखाने के लिए कि उसके लिए ये सब नॉर्मल था। What did the doctors suggest? Hope you enjoyed and learned basic concept of today's topic. Don't forget to answer the question and write the answer of this question in your summer vacation copy or journal within 24 hours to maintain your summer vacation learning project marks, as total marks of this question will be added in your final term exams based on your reply of all questions. The marks of these questions are 10. Hope to see you in the next topic and learn more new concepts. Thank you. Bye bye.